वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। गणेश दिस साइड फ्रॉम मॉम एंड मी व्लॉग्स। अच्छा नहीं था ना, तो फिर लेट्स मेक इट मोर रिफ्रेशिंग। बट बिफोर दैट लेट्स डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो अभी की सबसे पहली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली, कॉफ़ी। So now as I am done with my coffee, second important चीज़ नहाना। So just अभी रेडी होकर आया। Welcome back to the channel everyone, Kanish this side from Mom and Me Vlogs। और थर्ड important चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये काम है जो आपको करना है। और वो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन जो रेड बटन है उस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को देखते देखते यार लाइक भी कर दो। सो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। येस, आई एम गोइंग फॉर माई वेरी फर्स्ट राइड विद RPM इंडिया। और बेसिकली मैं अपने फ्रेंड, मेरा जो फ्रेंड है आदित्य चौहान, और उसका भी चैनल है गाजियाबादी राइडर के नाम से। सो हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट संडे मॉर्निंग राइड पर। सो बेसिकली टेक्निकली मैं राइड नहीं करूँगा बट आई विल ड्राइव। और काफ़ी दिनों से मैंने अपनी WRV नहीं चलाई तो सोचा क्यों ना WRV लेके चला जाए। बट जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था कि मैं अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। एक तो यार गर्मी बहुत है, देख रहे हो, फ़ैन चलाऊंगा तो नॉइस आएगी और नहीं चला रहा तो ये हाल हो रहा है जस्ट आफ्टर बेदिंग। तो चलो खैर ये सब तो होता रहता है। आप देख लो मैं अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ। ये है मेरा ट्राइपॉड जो मैंने अभी लिया है नया, जिससे मैंने हाल ही में अपनी लास्ट 2 व्लॉग्स जो है वो मैंने शूट किए। उसके साथ मैं अपनी लेके जा रहा हूँ सेल्फी स्टिक, पावर बैंक, फ़ोन चार्जर, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस फ़ोन से बनाता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा मेरे रिफ्लेक्टर्स हैं, ये माइक है। सो मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे टेक लेने पड़ गए, मुझसे गलतियाँ होती रहती है, फंबलिंग होती रहती है, तो इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव। सो अभी जो है हमको जाना है नोएडा सेक्टर 18 में, KTM इंडिया का शोरूम है, वहाँ पे सब एक्यूमुलेट होंगे और वहाँ से हमारी राइड शुरू होगी नोएडा सेक्टर 18 से लेके गुरुग्राम में बाइकर्स कैफ़े तक। तो मैं वहीं चलता हूँ और फिर हम वहीं मिलते हैं। सो यार आज के ब्लॉग की खास बात ये है कि एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी राइड पर जाने का। बट बेसिकली मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, आई विल बी ड्राइविंग माई होंडा WRV एंड आई लव टू ड्राइव। बट बहुत एक्साइटमेंट थी और इस चक्कर में सच बताऊँ तो मैं सारी रात सोया भी नहीं। तो अब चलते हैं, मैं फटाफट अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करता हूँ, मेरे को 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन चाहिए होगा। सो नाउ आई विल सी यू ओवर देयर। सो गाइज इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ। सारे राइडर्स जो हैं वो लाइन अप करके खड़े हो गए हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर द फ्लैग ऑफ द रैली। सो अब जो है कुछ राइडिंग शॉट्स देखने का टाइम है, तो अब आप ये देखिए। सो गाइज राइट नाउ वी टुक अ स्टॉप हियर एट सेक्टर 15 नोएडा फॉर द रीफ्यूलिंग ऑफ बाइक्स एंड हियर इज़ द माइटी KTM RC8 1190।
guys, now we have reached Gurgaon Bikers Cafe. So guys, these are the bikes, the Honda CBR 650, the Harley, and here is the another beast, the Ducati 959 Panigale. So guys, as usual you can see that my dream bike is here, the Kawasaki Ninja ZX-10R. What a mighty machine it is. And this one is the Ninja 1000. What a mighty look it has. So now it's time to go inside. So guys, right now we are inside the Bikers Cafe and the ambience is very nice, as we have seen already. So I'll just quickly, without wasting a lot of time, I'll just quickly take you through guys with the flow of event. So we'll start with talking about RPM India first, along with KTM. I think KTM does not need any introduction as such. So I would like to thank RPM India. Sorry, I'm not a good speaker at all. Yes, PAAJI is here, guys. You truly said कि अभी मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ग्रुप के बारे में, बट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इतना ज़रूर मेरे को पता लगा था. एंड आई ऑल्सो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. तो पर्सनली मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने बोला मेरे को स्टिकर्स दो, मुझे काफ़ी वुमेंस मिलेंगी ऑन द मोटरसाइकिल जनरल, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इसको. सो यार, ये सब था हमारे आज के राइड में, आरपीएम इंडिया की मेरी फर्स्ट राइड में. तो बेसिकली आज के अगर कॉस्ट के बारे में बताऊं कि आज जो हम लोगों ने राइड करी या फिर जो आरपीएम इंडिया ने जो है वो राइड किया, वो उसके पीछे कॉज क्या था. कॉज ये था जिसके पीछे मैंने वीडियो बनाई थी अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो. मैंने बताया था घूरना बंद कर इनिशिएटिव के ऊपर राइड था. सो जिसमें ये इंपॉर्टेंस दी गई है दैट, और सच्चाई भी यही बताई गई है दैट विमेन आर द ट्रू लीडर्स. तो बेसिकली हुआ ये था कि राइडिंग ग्रुप ने राइड किया था और विमेन राइडर्स ने उनको लीड किया था. सो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे मीटअप. जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा होगा, JS पाजी आए, मिस निहारिका यादव आई और उन सब ने अपने अपने जो है पॉइंट्स बताए राइडिंग को लेके और घूमना बंद कर इनिशिएटिव को लेके. सो काफ़ी भूख लग गई थी उसके बाद, और मैं तो खाना लेके बैठ गया हूँ. पकोड़े, ब्रेड है, पराठे हैं आलू के और चटनी है मज़ेदार. ये खा के फिर मज़ेदार एक मस्त चाय पियेंगे एंड आई थिंक उसके बाद फिर सारे लीव करेंगे. सो गाइस, फाइनली इट्स टाइम टू लीव नाउ. काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो गई है, धूप भी हो रही है, और ये रेफ बॉम्ब्स भी आप सुन रहे हो पीछे से आ रहे हैं ZX-10R के. सो एवरीवन इज़ लीविंग राइट नाउ. हम भी थोड़ी देर में यहाँ से बस निकलेंगे 5-10 मिनट में. सो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही बंद करता हूँ, यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ. एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली विद माई मॉम. So till then, take good care of yourself, ride safely, drive safely, enjoy your life, enjoy your day. Bye bye, hasta la vista. और ये कुछ शॉर्ट्स हैं आपके लिए, आप वो भी देख सकते हो. Ah, ah, ah.